learning about the accumulation of oil and gas. That means we'll be learning about the traps, or we'll be learning about the petroleum reservoir. You know which type of rocks are generally used for petroleum reservoir, which type of rocks are generally considered for the petroleum reservoir. Now we'll be learning that how generally it stored in a place, what are the specific criteria to be or to get a petroleum reservoir. So that thing we will be learning. So in your last class, I told you that migration is a common phenomena in petroleum and gas, oil and gas, and the migration of the petroleum, migration of that fluid will continue until it faces some obstacle. That you know, primary migration, secondary migration, you read. I hope you learned in your last class. So when it's facing some obstacle means if it's flowing like this and there is an impervious layer which it cannot penetrate, then it might be stored here. Okay, if there is no place to go, then it will be staying there if there is a chance. Okay, so the migration of petroleum continues until it faces some obstacle. You have to understand this part in its way. So any kind of impervious rock which is coming in the way of that migration path of that fluid, the petroleum and gases, it will create a situation where oil will be accumulating. So when it hindered by the migration path is hindered by some impervious material, there is a chance of having petroleum reservoir. There is a chance of having traps. Trap would be the correct word in this case. Okay. So when it's stored on a commercial scale of oil trap, an oil trap is formed. So sometimes you will be find this volume is in a large amount, where if you do the extraction, it will give you some profit, और a huge amount of profit. जो profit तुमको margin रखना है वो अगर मिलता है, then it will be called as a oil trap. Okay. So what happened here, all the oil containing strata appear to be a natural storage tank of oil and gas. Generally you will find a impermeable जिसके थ्रू कोई fluid pass नहीं होगा. So you will find generally a impervious layer occurring at the top of this strata, top of this oil trap, and that is called the gap rock. If I take an example, let's take an example. This thing I have already discussed, that anticline, syncline, and that time I show you some example that anticline could be a good one for petroleum reservoir. It could be a good petroleum trap rock or like this. Okay, suppose there is a permeable layer. So at first let me draw the permeable layer. This is my permeable layer through which fluid can move. Okay, above of which you have some shell layer. Okay, and above of which you have some limestone example. So this is your shell layer. Okay, and this is the limestone. लाइमस्टोन किस टाइप का रॉक होता है? इज इट igneous or sedimentary rock? Sedimentary rock. Okay, so above of which you have limestone and below of which you have shale. Similarly you have another shale layer here. Okay, and you might know that shale layer is giving, so this is our shale, generally we denote it with SH, and limestone as LST. You know that, right? So what will happen? Shale is made up of clay particles. It's a transformation from the clay. Okay, गांव के साइड में, ये मैं बताया भी होगा तुम लोगों को, मालूम है कि नहीं, ये एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ.
कि गांव के साइड में if you go there and they dig a hole sometimes in their agriculture field, they used to dig a hole, okay, and they used to store water there for some reason. अभी ऐसे if you dig a hole and put water there, then what will happen? The water will percolate through this wall और कितना वाटर देके वो निकल ही जाएगा और most of the water will percolates in the sides, okay, via this one. So what you have to do, you have to put a impermeable material here. That's why some of the people, or in most of the cases, you will find that people are using bentonite clay. किसी की गांव की तरफ घर है ऐसे देखे होगा अभी. So some of them are using the bentonite, or most of the cases they are using the bentonite clay in the, so they put a bentonite clay layer which is impermeable. So the point of saying or the point of giving this example कि ये water को pass करने नहीं देगा this layer. Similar thing, the shale is impermeable layer you can consider. There might be some porosity available, there might be some pores available there, but the permeability is very low for shale. So as a geophysicist like me, when we do the exploration for petroleum, we generally look for the sandstone, we generally look for the shale, okay, we generally look for the salt dome that I will discuss later. So shale is one contributing factor, or is a one formation factor we look after. Is any shale material available there, so that इसको तो रखना भी है ना इस यहाँ पे स्टोर करके. So shale will act as a impermeable layer and no petroleum or no fluid will pass through the shale. So we'll be considering shale here. And yes, I think, okay. So and here in your last class, you know, at the top you will have the gas layer, below of which you will have the oil layer, and below of which you have water, okay. And let's say for our sake of understanding, ऐसा होता नहीं है most of the cases, but for our sake of understanding, I'm considering this portion is made up of permeable layer, sorry, impermeable layer, क्योंकि यहाँ पे आके मैं स्टोर कर देना हूँ और जाने नहीं देना हूँ कहीं पे. सो वाटर के ऊपर ऑयल एंड गैस रहेगा ना, तो यहाँ पे ये पैक्ड अप हो जा रहा है और कहीं से जा नहीं पा रहा है. अगर मैं लेमन की तरह बात करूँ तो, and this rock, this shale and limestone rock, this rock is termed as cap rock. इसको बोलते हैं cap rock. सील कर दिया ऊपर से, वो कहीं से नहीं जा पाएगा, okay. So what is the definition of cap rock? The impervious layer like shale occurring at the top of the oil trap, and this is our oil trap, this is the trap, okay, and this impervious layer is called the cap rock. ये टर्म मैं अभी यूज करने वाला हूँ बहुत बार, तो याद रखना. So in case of hydrostatic equilibrium in the trap, so what will happen? The oil water contact is almost level, but certain cases it may tilt it to a few degrees. That I will discuss later why it's happening. So in such cases, the gas will occupy the highest part of the trap, as you know from your last class, and the oil pool you will be having after gas. And sometimes you will find this is not this way, some tilting position or some tilting like ऐसे तो नहीं भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, okay. This could be the water, this could be the oil, and this could be the gas. समझ रहे हो? ये पूरा हिस्सा गैस से भरा हुआ है. So these are also very common. And next portion, next layer is made up of oil. So it is very difficult to decide the time of accumulation. Last time I was discussing, okay, of oil and gas in a trap, because not only the time, several variables are contributing, several factors are contributing in this situation to accumulate a oil and gas structure, a oil and gas reservoir or oil and gas trap, okay. So factors controlling the migration and accumulation may be developed in under various conditions.
सेवरल फैक्टर्स इन नॉट ओनली द टाइम. अगर टाइम से तुम एक्सप्लेन करने जाओगे क्यों यहाँ पे स्टोर हुआ है, क्यों यहाँ पे हम लोगों को स्टोरेज मिल रहा है, वाई वी आर गेटिंग द पेट्रोलियम ट्रैप्स हियर, दैट यू कैन नॉट एक्सप्लेन ओनली विथ टाइम. कि टाइम स्केल से मैं बता दिया इसको. देयर आर सेवरल अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व इंक्लूडिंग द माइग्रेशन फैक्टर. द माइग्रेशन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस ऑल्सो. So throughout the history of the earth, geological changes have been taking places, and the internal and the external features have been changing, specifically in case of sedimentary rocks. And you know that most of the traps happened in a sedimentary rock. So however, we may correlate the age of formation, but a time scale or that pre-Cambrian rock, or I'm talking about the Miocene age, that are not the estimating parameter here. Several parameters, several factors involved here. Okay, so now we'll learn the how many types of traps are there, what are the classification, how we could do a classification of traps. Okay, so traps could be your structural traps, it could be your stratigraphic traps, it could be combination of structural and stratigraphic traps. So if I classify traps, okay, so traps could be of the most important one, and this one you know, okay, that is the maybe you don't know the petroleum perspective, but what are the structural traps that you know. Okay, second one would be the stratigraphic, and third one is a combination of structural plus stratigraphic trap. At first I will be discussing about the structural traps, and it can be found due to some. So structural trap कैसे डेवलप होता है, पहले मैं एग्जांपल बता देता हूँ. मतलब what are the different type of structural traps, let me tell you. First one is the anticline, second one is the syncline. Those are very common structural traps. And third one is the homocline. जब मैं ये सब पढ़ा रहा था तब मैं बताया था कि मैं फालतू का जिनिस नहीं पढ़ा रहा, मतलब जो काम में आएगा वही मैं पढ़ाऊँगा. देखो अभी ये काम में आएगा, तो अब yes fault could be a structural trap also. I'll come to that. It's a good point. Fault could be a structural trap also. Okay, and yes, तुमने याद रखा और मैं मिस कर गया, ये फॉल्ट है. ठीक है. Now tell me one thing, what was my question कि how these structural traps are formed, when I'll be saying it as a structural traps. Okay, give me a minute. Okay, so कब मैं बोलूँगा कि ये सब स्ट्रक्चरल ट्रैप्स है, एंड मोस्टली हाउ द स्ट्रक्चरल ट्रैप्स आर डेवलप्ड, कैसे एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन, होमोक्लाइन एंड फॉल्ट डेवलप इन ए रॉक स्ट्रक्चर, कैसे होता है, क्या फेनोमेनन होता है, नेचुरल फेनोमेनन के ये सब बन जाता है. बोलो, अर्थक्वेक हो सकता है, हाँ यही काफ़ी है, अर्थक्वेक काफ़ी है, और अदर प्रोसेसेस में भी देयर, बट आई एम कंसीडरिंग हियर द अर्थक्वेक. ओके, so what happened, the structural traps are generally formed due to the tectonic activity, due to the earthquake events. Okay, and in the layered rock forming force, मैंने प्लेट टेक्टोनिक पढ़ा है कि नहीं, प्लेट के बारे में बताया हूँ कि नहीं, कि 12 मेजर्स प्लेट रहता है, फ्यू माइनर प्लेट्स रहता है, क्योंकि वो अभी काम में आने वाला है आफ्टर सम टाइम. ओके, सो generally developed due to the tectonic activity, due to the earthquake, and this type of structure is capable enough to store oil and gas. Most common one is the anticline. Okay, so this should be your favorite one to be considered as a trap. Okay, syncline भी होता है, but anticline, most of the cases you will find anticline structure. Okay, so an anticline structure, you know, it's a convex upward style. If you forgot, that is our anticline structure. फोल्ड में याद करो.
So it's a most ideal oil trap, and it has shown a close connection between the occurrence of petroleum and the anticline. This is the favorable place where oil can get trapped easily. Okay. So when the rock layers are folded and taken in a convex arc or arch-like shaped, okay, or shape of a dome, it's generally called anticline, as you know. It's a convex arc structural features. And in this anticline, just in your previous page, I draw that diagram. Okay, so this is our anticlinal structure, and here what you are seeing that water at the bottom, above which you are having oil, natural oil obviously, and you are having gas at the top of it. So natural gas is floating, you can say in a sense, under the impervious layer. वो समझने के लिए वो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें. And these structures are most common. That's why मैं जब भी example दिया तो मैं anticline का दिया. You have seen that photograph also, like that geological structure and all during your fold class. During your structural geology class, I show you some photograph regarding that. Q anticline is very important. This has the common features, and most of the cases you will be looking for an anticline to have some natural gas and oils. Okay. अब कहीं पे एंटीक्लाइन मिल गया तो इसका मतलब तुम खुश मत हो जाना, ऐसे नहीं होता है. पहले क्या होता है इसका, मैं क्योंकि फिजिकल एक्सप्लोरेशन भी तुम्हारा इसका पार्ट है, लेट मी टेल यू ब्रीफ आइडिया कि जियोफिजिस्ट क्या करते हैं, उसके बाद पेट्रोलियम इंजीनियरिंग पीपल क्या करते हैं इस फील्ड में, ठीक है ना. जियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा हट के डिस्कस कर रहा हूँ. सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल जो काम होता है वो होता है कि जियोलॉजिस्ट का. सो जियोलॉजिस्ट क्या करता है, दे बेसिकली कलेक्ट ऑल द टोपोसिट्स. टोपोसिट्स मीन्स द टोपोग्राफिक मैप. If any structural map is available in that area, that will be collected by him or her. Okay. Later अगर कोई स्टडी हुआ है उसका इंफॉर्मेशन या लिथोलॉग अगर रहता है, इफ़ देयर इज़ एनी लिथोलॉग्स हैज़ बीन पब्लिश्ड इन दैट एरिया, और उस एरिया का कोई लिथोलॉग रहता है, वो लेके सारे कुछ लेके एक पहले प्रिलिमिनरी स्टडी का मैप बनाएगा. ओके. सो सपोज यू हैव टू सर्वे द एंटायर हावड़ा. ओके. सो दे विल लुक आफ्टर कि क्या इंफॉर्मेशन मेरा है, प्राइमरी इंफॉर्मेशन क्या है. सो seeing the primary informations, they will decide. And another thing that you will learn in your next class, that is they first, सबसे पहले वो सोचेगा ये किस बेसिन के अंडर में आता है. ओके. अभी बेसिन के बारे में तुम लोगों को मालूम नहीं है, ठीक है ना. तो पहले ये सोचेगा बेसिन के बारे में क्या होता है, उसका क्या इंफॉर्मेशन मुझे अवेलेबल है. फिर उस एरिया के बारे में सोचेगा कि इस एरिया में क्या क्या सिचुएशन है, लाइक द होल वेस्ट बंगाल और दिस पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, मुर्शिदाबाद, मालदा, and up to this basically falls under the Bengal basin. Okay. So बेंगल बेसिन का एक नाम खराब है कि बेंगल बेसिन में ऑयल प्रोड्यूस नहीं होता है, until unless कुछ दिन पहले एक मिला, मंत्री जी ने उद्घाटन भी किया उसका, जो भी हो, वो by ONGC find out some blog. Okay. Whatever. So वो देखने के बाद जियोलॉजिस्ट दे विल, ये पूरा हावड़ा का मैप है, दे विल इन्वेस्टिगेट, दे विल डू सम फील्ड इन्वेस्टिगेशन. पत्थर देख के वो आइडिया लगाएगा. स्ट्रक्चरल जियोलॉजिकल कोई फीचर अगर अवेलेबल है, एक्सपोज्ड है, उसको देखेगा. दे विल बी लुकिंग आफ्टर द स्ट्रक्चरल फीचर्स विच आर एक्सपोज्ड, द रॉक टाइप्स विच आर एक्सपोज्ड, द आउटक्रॉप you are having. By enter they will give you a report mentioning that this area, the entire Shivpur is a huge area. Okay. Shivpur has a potential of having, suppose Shivpur में तो कभी नहीं होगा, Shivpur has the potential of having some petroleum. Okay. Or it could contain some places where the petroleum or oil traps are there. After that, sometimes they also use the airborne survey. जियोफिजिस्ट समटाइम्स जियोलॉजिस्ट ना करके ये जियोफिजिस्ट पूरा एरिया का एयरबोर्न सर्वे कर लिया, मैं अभी उसके बारे में बता नहीं रहा. आफ्टर दैट जियोफिजिस्ट कम्स इनटू द, दे कम इनटू द पिक्चर. ओके. वो लोग क्या करते हैं, इस एरिया का सर्वे करते हैं. ये शिवपुर एरिया दे दिया और शिवपुर एरिया के वो ऐसे करके सर्वे करते हैं.
several methods are available here, okay, and these methods are expensive, okay. So पूरा एरिया का सर्वे करने के बाद दे फाउंड आउट कि इस प्लेस में मान लो कि हम लोगों का इंस्टीट्यूट के जगह पे वेल का अवेलेबिलिटी है, वो भी मेन बिल्डिंग के पास मान लो उसने बोल दिया, और साथ में ये भी बोल दिया कि इसका क्वालिटी कैसा है एंड कितना वॉल्यूम में है, कितना प्रॉफिट होने वाला है। वो रिपोर्ट देखने के बाद आता है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग पेपर। वो लोग प्लान करते हैं कि कैसे इसको स्टार्ट करें। छोटे में ये होता है एंटायर सिनेरियो। सो when we do means that geophysicists look for a underground structure, okay, they might look for the anticline। मन में रहता है कि भाई एंटीक्लाइन मिल जाए, और इसमें अगर इसमें बोला है कि दिस बेसिन इज प्रोड्यूसिंग, दिस बेसिन इज हैज़ ए चांस ऑफ हैविंग सेवरल ऑयल ट्रैप्स, सो ये सुन के तुम मन में बोलोगे कि अगर एंटीक्लाइन मिल जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल फाइंड एंटीक्लाइन, ओके। So this anticline is the more common type of traps and it might be associated with some fault. I did show some example in the that fault class if you remember, okay, that fault के साथ कैसे associated होता है ये, and it extend invariably। अभी तो मैं इतना छोटा सा ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन it can extend up to 1 kilometer। एंटीक्लाइन का फ्लैंक कितना बड़ा होता है, वेव लेंथ कितना होता है, मैं क्या बोला था 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो एज ए जियोफिजिसिस्ट हम लोगों का ऑब्जेक्टिव रहता है कि कोई इस पॉइंट पे है और इसका क्या क्वालिटी है वो निकालना। क्वालिटी कैसा है, किस पॉइंट पे ये इसका लोकेशन है, एंड इज इट प्रॉफिटेबल और नॉट, दैट वी जनरली डिसाइड। सेकेंड टाइप ऑफ ट्रैप, स्ट्रक्चरल ट्रैप, इज सिंक्लाइन। यू नो व्हाट इज सिंक्लाइन? ऐसे अगर रहता है तो इट्स कॉल्ड synclinal type, okay. Let me draw the diagram properly, okay. मैं दो ही ड्रॉ कर रहा हूँ। So consider this layer is the shell layer, okay, and this layer is the impermeable layer. This is the cap, okay, and this could be a different layer. Let's say it's a limestone, okay, and this layer below of which has a, this is also a shell layer, okay. So this is shell, and below, in between two shell layers you have the permeable layer. So in this permeable layer at the top you will at the top you will have the gaseous layer, and अगर गैस नहीं रहता है, ओनली ऑयल रहता है, वाटर भी मैं सोच नहीं रहा हूँ, सो द ऑयल यू विल फाइंड हियर लाइक दिस, दैट विल बी द ऑयल। आई एम नॉट कंसिडरिंग द वाटर एंड द गैस कंडीशन। तुमको तो मालूम है कि गैस में गैस ऊपर रहता है, देन ऑयल रहता है, देन वाटर रहता है, होता ही है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो एक्ट एज ए स्ट्रक्चरल ट्रैप, and in the other words it is like an inverted dome। you know that syncline is an inverted syncline। हम लोग साइंटिफिकली कैसे डिस्क्राइब किए थे? it is concave upwards, that means inverted dome, okay, and oil accumulates at the trough of the synclinal structure when the host bed is free of water। so when I am not considering the water or I am not considering the gas, then the oil you will be having at this portion for obvious reason कि यहाँ पे oil मिलेगा हम लोगों को, क्यों ऐसे रहेगा ना। अगर कोई कटर रहता है और उसमें थोड़ा सा तेल ले तो तेल तो नीचे रहेगा ना, ये कॉमन कॉन्सेप्ट है, इसमें एक्सप्लेन करने का कुछ नहीं। And in such movement downward along the flank of the syncline and collect straws above the impervious rock, so it can store oil from, so suppose the wells are coming from here, the natural wells are coming from here and it's storing it here, तो जितना टाइम तक यहाँ तक ये स्टोर कर सकते हैं सपोज, तो वो स्टोर होकर रह जाएगा ऐसे ऑयल ट्रैप। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द होमोक्लाइनल स्ट्रक्चर। ये तो क्वेश्चन आया होगा दिमाग में कि होमोक्लाइन से क्या होता है। I'm talking about the structural trap,
If you forgot, in any case, the third one is the homocline. So I am talking about the now homoclinal structure. Let me draw this homoclinal structure here. Okay. homoclinal structure, I hope you remember from your 4th class. इसमें फोल्डिंग उतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना, फोल्डेड बेड उतना अच्छे से अच्छा समझ में नहीं आता है, उसको होमोक्लाइनल स्ट्रक्चर बोलते हैं. मैं अपनी सुविधा के लिए यहाँ पे सेल कर रहा हूँ. दिस इज ऑल्सो सेल स्ट्रक्चर. ओके, एंड दिस जोन is our dike intrusion. So in case of homoclinal structure, and this is the permeable layer. So when a dike intrusion you are having, means this is the impervious layer. If the natural oil and gases are coming through this layer, it will not penetrate this layer. ये कॉमन कॉन्सेप्ट है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ. सो यहाँ पे अगर ऑयल एंड गैस रहेगा तो कैसे रहेगा, इस पोर्शन में गैस रहेगा, देन यू विल हैव द वेल, then you have the water. ऐसे रहेगा. So in the homoclinal beds which are uniformly dipping, homocline के एग्जाम मतलब डिस्क्रिप्शन में यही लिखा हुआ है. homocline means uniformly dipping beds. भूल गए तो एक बार पढ़ लेना उसको, ठीक है. So if your homoclinal in a homocline the beds are uniformly deep in one direction and the well is migrates in the opposite direction of the dip until the flow is kind of obstructed by this impervious dike intrusion, or impervious not dike intrusion. Okay, so due to this igneous intrusion यहाँ पे ये रुक जाता है and they store it here. Okay, so this arrest of oil, gas and water basically give you a oil trap. Okay, now किसी ने बोला था कि सिर्फ फॉल्ट के लिए क्या होगा, फॉल्ट भी तो होता है. अब बोले थे उस टाइम पे फॉल्ट में भी सेम सिचुएशन होता है. कैसे होता है, कैन एनीवन एक्सप्लेन? फॉल्ट के बारे में कौन बोल रहा था? ओके, मेरे तो टेल मी कैसे फॉल्ट में कैसे हो जाएगा. एक सिचुएशन मुझे डिस्क्राइब करो. ये बहुत ही स्टूपिड सा मतलब एक्सप्लेनेशन है, बोलो. एंड यू आर एक्सपेक्टिंग दैट उस टेक्सचर में ऑयल स्टोर होके रहेगा, तो उससे क्या फ़ायदा होगा. यस, देन मतलब फॉल्ट में कैसे ट्रैप डेवलप होगा ये सोचो तो एक बार. बहुत ही सिंपल है. फॉल्ट में क्या होता है ना, नो कैपिलर रिएक्शन. डोंट थिंक अबाउट द कैपिलर रिएक्शन. मैं सिंपल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सपोज दिस इज माई परमिएबल लेयर. आई एम कंसिडरिंग दिस इज द परमिएबल लेयर एंड अबव ऑफ व्हिच यू हैव द इम्परमिएबल लेयर्स. एक लेयर ऐसा है और एक लेयर ऐसा है. सो दिस इज माई परमिएबल लेयर. Okay, and I'm expecting the oil and gas is traveling in this way, suppose under pressure and what. So fall में क्या होता है, ये ब्लॉक अगर ऊपर रहेगा then for obvious reason अगर इसका ऐसे शिफ्टिंग होता है, that means इस साइड में ये वाला जो लेयर है परमिएबल लेयर है वो यहाँ पे मिलेगा तुमको. Okay, above of which you have this layer, below of which you have this layer. आप बोलो समझ में आया कि नहीं. तो क्या हो रहा है ना, ऑयल एंड गैस जो ट्रैवल हो रहा था इस लेयर के थ्रू, दिस परमिएबल मींस दिस वाइट लेयर के थ्रू, देन दे विल बी स्टोर्ड हियर एट दिस पोर्शन. सो पहले गैस रहेगा, उसके बाद आएगा ऑयल, उसके बाद आएगा वाटर. जो मैं इसको रेड डॉट दे रहा हूँ, फॉल्ट में ऐसा ही होता है ना, डिस्प्लेस हो जाता है. सो फॉर ऑब्वियस रीजन ये वाला लेयर ना और भी इम्परवियस लेयर्स जो आसपास है वो आके इस जगह को ब्लॉक कर दिया और उसके वजह से ये एक स्टोरेज बन गया. सो वी ऑल्सो लुक फॉर द फॉल्ट एज ए जियोफिजिस्ट एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ मेनी पूल्स इज होलली और पार्शियली ड्यू टू द फॉल्टिंग व्हिच मे बी सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड.
And if I say only anticlinal structure or only faulting structure is there, then I might be wrong. You will find some anticlinal structure associated with the fault, which are giving you excellent trap condition. Okay, so these things are this faulting and must sometimes or most of the cases you will find the combination of two structural features like anticlinal fault, synclinal fault are together are making a well trap. Okay, so these things are very common. Now let's talk about the stratigraphic traps. स्ट्रेटिग्राफिक के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ. एक चीज़ याद रखो, स्ट्रेटा, you know about the strata. Strata means layer after layer after layer. That's called the stratification in sedimentary rock. Okay, stratigraphic traps are related to the deposition of sediment. Stratigraphic, there is a term, मैं बोल ही देता हूँ इसको, stratigraphic sequence. इसका मतलब ओके, स्ट्रेटिग्राफिक सीक्वेंसेस का मतलब क्या है, एक लेयर के बाद और एक लेयर का अरेंजमेंट कैसा है. दिस इज लेयर 1, दिस इज लेयर 2, दिस इज लेयर 3. हाउ दे आर अरेंज्ड एंड हाउ दे आर फॉर्म्ड, दिस थिंग्स हैज बीन स्टडीड और दिस थिंग्स जनरली स्टडीड इन स्ट्रेटिग्राफिक सीक्वेंसेस. ओके, कि कैसे इसका अरेंजमेंट है. सो हियर इन द स्ट्रेटिग्राफिक ट्रैप्स they are related to various factors. Obviously they will be related to, if I talk about the stratigraphic traps, then they will be related to depositions of sediments. Okay, then lithology, then the facies. मैं अभी facies means एक चीज़ समझ लो, facies का मतलब क्या होता है. Rock facies, facies means the appearance of any rock layer. Okay, sometimes in the sedimentary rock you will find, I have shown you some photograph that cross bedding रहता है ऐसे करके. Okay, so ये एक facies बन गया. The pattern you are seeing or the assemblages of rock patterns is called facies. So depending on the deposition, और ये मैं बहुत ही शॉर्ट में समझा रहा हूँ. फेसिस का और भी बहुत बड़ा मीनिंग है इसका, एक मतलब मान लो कि एक चैप्टर ही है अलग से. फेसिस चेंजेस, diagenesis, unconformity and the erosions. Unconformity you have read, basically contributing the stratigraphic traps. And as a matter of fact, these stratigraphic traps and all these structural traps are, you can consider these stratigraphic traps the indication of the structural effects. They are also developed from the structural effects, means बात को एक से डेवलप हुआ होगा. First one, stratigraphic trap. So stratigraphic trap it can be divided into traps can be divided into two types. Okay, one is primary, another one is the secondary. So in case of primary stratigraphic traps, the impervious concave surface boundary at the top you will be seeing. You will be seeing impervious cap at the top, and these traps are formed during the deposition of sediment, the nature of which decides the characteristics, the porosity, permeability of the reservoir rocks and the formation of various structural features. मैं अगर बहुत सिंपल वे में बताऊं कि स्ट्रक्चरल जो ट्रैप बनता है, the structural traps generally form due to some tectonic activity. ये अच्छा खासा मेरा रॉक बॉडी था और उसको उसने तोड़ मोड़ कर दिया अर्थक्वेक ने, और मेरा स्ट्रक्चरल ट्रैप बन गया. स्ट्रेटिग्राफिक ट्रैप के लिए जो प्राइमरी होता है, उस ट्रैप के लिए सेडिमेंट ऐसे डिपोजिट हो रहा है, इसका एक नेचर ही है पोरोसिटी परमेबिलिटी होना. ओके, सो सपोज देयर इज ए impermeable layer here and this is the impermeable layer at the top. In between you have the permeable layer and in between you will have the, suppose this layer is containing or acts as a oil trap. तो ये तो जनरल केस हो गया ना, इसका कोई मतलब स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं है. ओके, सो एट सम पॉइंट यू कैन कंसीडर ऑल थिंग्स आर स्ट्रक्चरल रिलेटेड, बट इन दिस केस दिस इज द नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मल कंडीशन. कोई किसी को चेंज नहीं कर रहा है ड्यू टू इट्स ओन नेचर, ड्यू टू इट्स ओन प्रॉपर्टीज ऑफ द रॉक, लाइक सैंडस्टोन.
It's porous and permeable, it can store, and sometimes you will be finding sedimentary rock of some layers are impervious. So these act as a cap rock. Okay, here this type of trap is called the stratigraphic trap. So the primary stratigraphic traps can be classified into two forms. One formed in the clastic. I hope you remember clastic and igneous, and another one is the one formed in the clastic and igneous rock in the form of lenses, and another type is the chemical rock. So primary can be considered as the clastic, and another one is the organic. क्लासिक के बारे में मैं बता रहा हूँ, अभी मैं ऐसे करके ड्रॉ किया हूँ कि मैं गलत किया हूँ. In cases there is very common term in petroleum, that is the sand lenses. Sand lenses, what does that mean? So I am talking about the traps in the clastic rock. जो किसका क्लासिफिकेशन है बताओ, बोलो किसका बारे में बात कर रहा हूं मैं, ये किसका टाइप है, अरे बोलो मीर. प्राइमरी स्टैटिग्राफिक टैप को दो हिस्से में डिवाइड किया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी स्टैटिग्राफिक टैप which can also be divided into two types, plastic and organic, non-plastic. Okay, so in case of plastic sedimentary rock there is a very common term, and that's very मतलब बहुत ही common है most of the cases, that is other than anticline and all, that is the sand lenses. Very important. Okay, so sand in clay or the sand lenses, I'm writing it like this. So under the plastic rock, so पहले हम लोगों ने स्ट्रेटिग्राफिक ट्रैप देखा, उससे मैं प्राइमरी पे आया. प्राइमरी कैन बी डिवाइडेड इनटू दिस, एंड दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू फर्स्ट one is the sand lenses. When a clay layer is mixed with the sand layer, sometimes you will find that the interstructure I have drawn, that is made up of clay, in between them, that's very common, you are finding a lens like structure which is made up of sand, and बाकी ये जो layer है ये पूरा clay है. Okay, and this is your sand. So the fluid can come here and stored, can be or this portion can be used as a well trap. So mostly water remains behind in the clay. You will have, due to the surface tension of oil comes out of the clay and is stored in the sand. So it will be storing in the sand, and इसका एक फ़ायदा क्या है कि ना जो water है, due to the surface tension on all, it will be left behind. Only oil can travel and it will be stored here. So similarly, when a sandstone are within the shell, oil comes out of the shell and accumulates within the sandstone. So it could be a sand or it could be a sandstone layer. Both of the cases you will be having oil only, water को वो पीछे छोड़ देगा. Okay. So this lenticular shaped structure are very common in most of the reservoirs. Lenticular means lens-like. Okay. And it called the lenses. It called the sandstone lenses or sandless lenses. So these are most porous and permeable one. So ये impermeable हुआ, ये porous and permeable हुआ. तो हम लोग जियोफिजिक्स में क्या देखते हैं ना, वो हम लोग एनामली देखते हैं. कोई भी सर्वे होता है, कोई भी स्कैन होता है, अगर बॉडी का भी स्कैन करना है ट्यूमर के लिए, ट्यूमर क्या बोलते हैं, तुम अगर रिपोर्ट में देखोगे उसको एनामली बोलते हैं. ठीक है ना, जो उसके साथ फिट नहीं कर रहा है. तो यहाँ पे तुमको एनामली सिग्नेचर बहुत अच्छे से मिल जाएगा. ठीक है ना. ओके, मैं सिंपल से बता रहा हूँ. ओके.